Assalamu alaikum students. Today is Monday, May 3rd, 2021. I am Asim bin Salim and I welcome you all in the science class with a new lesson. So students, in the previous class, we studied about microorganisms. So what were these microorganisms? Microorganisms were those living creatures that are invisible to human eye, but we can view them by using high quality microscopes. Okay. So what were the main kinds of these microorganisms? They were like bacteria, viruses, and fungi. We discussed them in detail. Today we are discussing them about the advantages and disadvantages of these microorganisms. So how they are helpful and how they are damaging for humans and plants and other living organisms. So advantages of microorganisms. So microorganisms are useful in many ways to humans. Microbes are small but they are mighty. Without microbes we cannot digest our food properly. So एक तो यूज ये आ गया आपके पास कि हमें फूड डाइजेस्ट करने के लिए क्या रिक्वायर्ड होते हैं माइक्रोब्स. दिस मीन्स बैक्टीरियाज एग्जिस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट विद इन आवर बॉडी. Then food. In food, E. coli and yeast are used in the foods like yogurt formation. So दही बनाने के लिए जो मिल्क से दही की ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो उसके लिए क्या यूज़ होते हैं आपके पास बैक्टीरियाज की दो फॉर्म्स ई कॉली एंड यीस्ट वो यूज़ होते हैं टू मेक फॉर द फॉर्मेशन ऑफ योगर्ट. देन फर्मेंटेशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बेकरी आइटम्स लाइक ब्रेड बन बिस्किट्स वी यूज़ यीस्ट. इट इज़ अ फंजाई. सो फंजाई को हम यूज़ करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ bakery items to keep them conserved over a period of time. Moving on, in agriculture, how they are used. So many microbes are beneficial and essential for decomposing organic matter and recycle old material. So these provide nutrients to the plants and hence helpful for the agriculture. So क्या क्या beneficial है जी? Decompose organic matter. Organic matter क्या होता है? Waste product of the humans, animals and the dead bodies. So इनको decompose करना जो हमने पहले पढ़ा था डिकम्पोजर्स का रोल होता है. सो वो डिकम्पोज करके सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं. सो वहाँ पे डिकम्पोजर्स का रोल कौन प्ले करता है? दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. देन इन मेडिसिन पेनिसिलिन obtained from the fungi penicillium is used to make vaccine. So vaccination हमारी जो होती है चाइल्ड की बच्चे की शुरू में जो वैक्सीन बच्चे को पोलियो की वैक्सीन दी जाती है या इस तरह की HIV एड्स वगैरह की वैक्सीनेशन होती है उसके अंदर एक यूज़ होती है पेनिसिलियन. ठीक है. वो किससे ऑब्टेन्ड होती है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है फंजाई जिसे हम क्या बोलते हैं? पेनिसिलियम से मेड होती है. नाउ हाउ दे आर हार्मफुल अब हम ये भी देखते हैं क्योंकि इस वक्त इट इज़ अ टाइम ऑफ पेंडेमिक ड्यू टू कोरोना वायरस. सो दैट इज़ वायरल डिजीज. So far we have discussed about advantages of fungi and bacteria. I don't think so we have discussed about any of the virus that is helpful. So how they are harmful we are going to discuss them. So disadvantages of microorganisms. Microorganisms can cause serious illness in humans like chickenpox, pneumonia, ear infection, food poisoning, strep throat and many more. We should take care of ourselves so that we stay away from these serious illness. तो ये सीरियस इलनेसेस लाइक निमोनिया चिकन पॉक्स देन फूड पॉइजनिंग. ये चिकन पॉक्स आपको ये बेबी के फेस के ऊपर जो नज़र आ रही है इसको चिकन पॉक्स बोलते हैं. ठीक है. ईयर इन्फेक्शन एंड फूड पॉइजनिंग लाइक दैट आर काज्ड ड्यू टू दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मेनली ड्यू टू वायरसेस एंड बैक्टीरिया. How infection is caused? When an infected microorganisms invade or enter in the living body, then multiples and can cause infection. तो क्या होता है जब भी कोई इन्फेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वेड करता है? इन्वेड मीन जीत जाना यानी फाइट अगेंस्ट ह्यूमन. इंसान के अंदर जो बैक्टीरियाज हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो फाइट करते हैं अगेंस्ट द डिजीज. ठीक है. अगेंस्ट द हार्मफुल कंपोनेंट्स या हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स. सो व्हेन दे जो अब वो इन्वेड कर लेता है और इंटर हो जाता है हमारी लिविंग बॉडी में तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये अपने मल्टीपल और सब मल्टीपल कॉपीज़ बनाना शुरू कर देता है.
सो जिसकी वजह से इसको कंट्रोल करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। सो वो क्या होता है, वो कॉपी बनने की वजह से वो इन्फेक्शन, वो छोटी सी शुरू में आपके पास छोटा सा आपके पास कोई हार्म होगी, कोई जख्म होगी, लेकिन वो ड्यू टू वायरल एक्टिविटी, ड्यू टू बैक्टीरिया, वो इन्फेक्शन स्प्रेड अप हो जाता है पूरी बॉडी में, ठीक है। अब बैक्टीरिया कॉल्ड स्ट्रेप्टोकोकस कैन काज स्ट्रेप थ्रोट इन्फेक्शन इन ह्यूमन बॉडीज़। तो ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर ये जो गला ख़राब होने की या गले के अंदर खारिश वगैरह होने की, उसके डिजीज़ काज की जाती है। कौन काज करता है? बैक्टीरिया कॉल्ड एज स्ट्रेप्टोकोकस। सो नेक्स्ट, इन्फेक्शन इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद इन द बॉडी। इन्फेक्शन किस चीज़ को कहते हैं? एक होता है आपको कोई इंजरी हो जाना या कोई डिजीज़ हो जाना, ठीक है। डिजीज़ पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल ये आपकी फिंगर पे कोई इंजरी हो गई, ठीक है। अगर वो इंजरी, या फॉर एग्जांपल कोई आपका चिकन पॉक्स निकला है, कोई दाना निकल गया आपकी स्किन के ऊपर, और विद इन सम टाइम वो स्प्रेड अप हो रहा है आपके, अगर वो फैलना शुरू हो रहा है, दिस मीन दैट बिकम्स इन्फेक्शन। इन्फेक्शन हम उस चीज़ को बोलते हैं कि ऐसी कोई इंजरी, ऐसा कोई जख्म, ऐसी कोई डिजीज़ जो कि स्प्रेड अप होनी शुरू हो जाए, हम उसको इन्फेक्शन बोलते हैं, ठीक है। सो इन्फेक्शन इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो वो इन्फेक्शन बेसिकली क्या हो रहा होता है कि उस वक्त जो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर गया होता है, वो अपनी मल्टीपल कॉपीज बना के नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बनने शुरू हो जाते हैं अंदर बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन हम उसको बोल देते हैं, ठीक है। नाउ आपको क्लियर होगा कि इन्फेक्शन क्यों बोलते हैं। सो इट स्प्रेड्स रैपिडली सो दैट द बॉडी डिफेंसेस आर ओवरवेल्म्ड। तो ओवरवेल्म्ड कहते हैं जीत जाना, ठीक है, उनको क्रॉस कर जाना, ठीक है। सो ये इतना फास्टली स्प्रेड करता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो डिफेंसेस होते हैं, यानी वाइट ब्लड सेल्स एज अ डिफेंडर के तौर पे यूज होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, सो उनकी भी जो पावर है डिफेंड करने की, उसको भी ये क्रॉस कर जाते हैं, इतने रैपिडली ये स्प्रेड अप होते हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन एंटर इन ह्यूमन बॉडी बाय डिफरेंट वेज, लाइक डर्टी हैंड्स that and the air we breathe, contaminated utensils which we use to eat, damaged skin and contaminated food or water. So ये देखें कहाँ से फैलते हैं, dirty hands के साथ, कि हम without washing our hand we are going to eat food. Also we use dirty utensils that might have germs and bacteria, so we should clean them and wash our hands before eating anything, okay. Following are the ways through which pathogens can spread. So pathogen एक वायरस या बैक्टीरियल डिजीज है, ये कैसे स्प्रेड करता है उसको हम देखेंगे। सो ह्यूमन टू ह्यूमन ये कैसे स्प्रेड करता है, इंसान से इंसान में कैसे स्प्रेड करता है, बाय टचिंग, स्नीजिंग, कफिंग एटसेट्रा। सो जैसे आजकल कोविड फैल रहा है, सेम सिम्टम है आपके पास, टचिंग से, स्नीजिंग से एंड कफिंग से, ठीक है। देन एनिमल टू ह्यूमन बाय ईटिंग डिजीज्ड और इन्फेक्टेड एनिमल मीट। सो इनिशियली कैसे स्प्रेड हुआ था ये, बैट्स से। सो बैट्स मीन्स वो इन्फेक्टेड थी, कोविड की बात कर रहा हूँ, तो वो इन्फेक्टेड थी, और वो इन्फेक्टेड बैट्स जब वो ह्यूमंस ने खाई तो वो ह्यूमंस पे आई, तो ह्यूमन से ह्यूमन आगे फिर आपको पता है टचिंग या स्नीजिंग या फिर कफिंग से स्प्रेड अप होती हैं। देन प्लांट्स टू ह्यूमन कैसे स्प्रेड अप होती हैं, बाय ईटिंग अनवॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो जब हम अनवॉश फ्रूट्स या वेजिटेबल्स खाते हैं तो प्लांट्स से ह्यूमंस में ये ट्रांसफ़र हो जाती हैं। नाउ व्हाट आर द वेज टू प्रिवेंट फ्रॉम दिस इन्फेक्शन? I think it is enough for today. We will study this topic in our next class. Hopefully next class will be your last lecture. We are ending up with our first midterm syllabus. Inshallah, after completing this, these 3 units are included in your first midterm exam. Inshallah, that will be commenced as soon as the schools are going to open for physical classes. From next week, or maybe after Eid, we are going to start revision of these 3 chapters. You guys have to work hard to learn the question answers, the objectives and long question, each and everything, so that you guys should be prepared for the exam when commenced after the revival of physical classes in campus. Okay, thank you for joining. Your homework will be shared in the WhatsApp group. Thank you for joining. Allah Hafiz.